हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट चौका नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 4 cos 2t i कैप प्लस 4 sin 2t j कैप plus 6t k cap meter, the acceleration of the particle at t is pi by 4 is 16 j cap meter per second square, 12 I cap meter per second square, minus 16 j cap meter per second square, minus 16 I cap meter per second square. Question number 2, a particle starts from origin at t0 with the velocity 5.0 I cap meter per second and moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of 3.0 I cap plus 2.0 j cap meter per second square. What is the speed of particle at the instant when its x coordinate is 84 meter, 23 meter per second, 12 meter per second, 25.9 meter per second, 15.8 meter per second. Question number 3, rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella to protect herself from the rain? Tan inverse 1 by 3 with the horizontal, tan inverse 1 by 3 with the vertical, tan inverse 2 by 5 with the vertical, tan inverse 2 by 5 with the horizontal. Question number 4, in a harbor, wind is blowing at the speed of 72 km per hour and the flag on the mast of boat anchored in the harbor fluttered along the northeast direction. If the boat starts moving at speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of boat? 30 degree south of east, 45 degree south of west, almost in the east northward. Solution. Question number 1, if the position vector of a particle is given by r is equal to 4 cos 2t I cap plus 4 sin 2t j cap plus 6t k cap meter, the acceleration of the particle at t is pi by 4 is 16 j cap meter per second square, 12 I cap meter per second square, minus 16 j cap meter per second square, minus 16 I cap meter per second square. The position vector है r is equal to 4 cos 2t I cap plus 4 sin 2t j cap plus 6tk cap. जो वेलोसिटी वेक्टर होता है v इज इक्वल टू डी आर वैक्टर बाई डी टी, तो इसका हम डी आर बाई डी टी कर दें 4 cos 2t माइनस साइन 2t इंटू 2 आई कैप प्लस 4 इंटू cos 2t इंटू 2 j cap प्लस 6 इंटू 1
k cap और v vector v minus 8 sin 2t I cap plus 8 cos 2t j cap plus 6 k cap। एक्सेलरेशन होगा dv बाई डी टी, इसका dv बाई डी टी कर दें, -8 साइन 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा cos 2t इंटू 2 आई कैप प्लस 8 cos 2t का साइन माइनस साइन 2t इंटू 2 जे कैप और 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 के कैप -16 cos 2t आई कैप माइनस 16 साइन 2t जे कैप प्लस 0 -16 cos 2t I cap minus 16 sin 2t j cap. Put t is equal to pi by 4. So a at pi by 4 minus 16 cos 2 into pi by 4 I cap minus 16 sin 2 into pi by 4 j cap minus 16 cos pi by 2 minus 16 sin pi by 2, this is I cap j cap. Cos pi by 2 is 0, so minus 16 into 0 I cap minus 16 sin pi by 2 is 1 j cap. 0 minus 16 j cap minus 16 j cap meter per second square. This is acceleration at t is equal to pi by 4 minus 16 j cap. This C is correct option. Question number 2. A particle starts from origin at t0 with a velocity 5.0 I cap meter per second and moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration 3 I cap plus 2 j cap meter per second square. What is the speed of particle at the instant when its x coordinate is 84 meter, 23 meter per second, 12 meter per second, 25.9 meter per second, 15.8 meter per second. This is xy plane O, this is x axis, y axis. Initially, speed in x direction ux is 5. Acceleration is 3 I cap plus 2 j cap और हम लिख सकते हैं ax is equal to 3, this is meter per second, ये meter per second square और ay is
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यू वाई इज 0। स्पीड जो कैलकुलेट करनी है वो है जब एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। सपोज एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 is at t is t second. After t second, so x will be ux into t plus half ax t square. X is 84, use 5 into t plus half into 3 t square. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 168 10t plus 3t square और 3t square plus 10t minus 1680, इसकी फ्रैक्शन कर दें, 168 28 168 84 242 221 3 and 7. 3t square plus 28t minus 18t minus 168 is equal to 0. t 3t plus 28 minus 6 3t plus 28 t minus 6 और 3t plus 28 t is equal to 6 और t is equal to minus 28 by 3. This is minus, hence this is not possible. So t is 6 second. After t second जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा that will be 84 मीटर. अब t सेकेंड बाद उसके कंपोनेंट vx होगा ux plus ax into t. u is 5 plus 3 into 6, 5 plus 18 23 मीटर पर सेकेंड और vy होगा uy प्लस ay इंटू टी. uy 0, ay is 2 और t is 6. This is 12 मीटर पर सेकेंड. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी will be v is equal to vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर रूट 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 529 प्लस 144 अंडर रूट 376 अंडर रूट 673 अंडर रूट 84.00 59. This is 25.9 मीटर पर सेकेंड. जो स्पीड होगी दैट विल बी 25.9 मीटर पर सेकेंड एट जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 होगा. तो सी इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 3. The rain is falling vertically with speed of 30 meters per second. A woman rides a bicycle with the speed of 10 meters per second north to south.
What is the direction in which she should hold the umbrella, her umbrella, to protect herself from the rain? Tan inverse 1 by 3 with the horizontal, tan inverse 1 by 3 with the vertical, tan inverse 2 by 5 with the vertical, tan inverse 2 by 5 with the vertical. Speed of rain Vr is equal to 30 meter per second, and speed of woman Vw is 10 meter per second from north to south. Suppose this direction is vertical direction and here is north and south, and this is vertical. The rain is falling vertically downward. This is Vr 30 meter per second downward. Woman is moving north to south. वुमेन है वो है नॉर्थ टू साउथ, VW 10 मीटर पर सेकेंड. Velocity of rain with respect to woman वो होगी VR वेक्टर माइनस VW वेक्टर और VR वेक्टर प्लस माइनस VW वेक्टर. तो इसको हम रिवर्स कर दें VW को, और दिस इज माइनस VW वेक्टर. इनका जो रिजल्टेंट होगा जिस डायरेक्शन में होगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल. दिस इज रिजल्टेंट. इसको अगर आगे बढ़ा दें दिस एंगल इज सपोज अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा. दिस इज इफेक्टिव डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल. दिस इज जो अम्ब्रेला लगाना होगा वो इस तरह से लगाना होगा. तो उसकी डायरेक्शन जो है वर्टिकल से अल्फा डिग्री पर. तो अल्फा होगा अगर हम इस ट्रायंगल में लें, दिस इज ओ ए बी सी, ट्रायंगल ओ ए सी, tan अल्फा is equal to AC by OA. AC is OB by OA और OB is 10 meter per second और OA is 30. 1 by 3, तो अल्फा is tan inverse 1 by 3. तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला वर्टिकल से tan इनवर्स 1 by 3 पर रखना होगा रेन से बचने के लिए. तो दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. इन ए हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट
speed of 72 km per hour and the flag on the mast of boat anchored in the harbor fluttered along northeast direction. If the boat starts moving at speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? 30 degrees south of east, 45 degrees south of west, almost in the east northward. This is east direction, this is west, north and south. Initially, the mast anchored in fluttered in northeast direction. Northeast direction. This direction is the wind direction. VW 72 km per hour. Speed of boat is towards north, VB. This is 51 km per hour. Direction of flag on mast of the boat तो वो होगा V वेक्टर विंड माइनस VB वेक्टर और VW प्लस माइनस VB वेक्टर. This is speed of wind with respect to boat. तो VB वेक्टर को अगर हम रिवर्स करके ऐड कर दें, दैट विल बी द रिजल्टेंट. यहाँ से हमने इसको 51 minus VB. This is 51 km per hour. इनका रिजल्टेंट VW और VB suppose this point is O, this is A, this is B and this is C. So resultant is this OC. ये पैरेललोग्राम है OACB. This is 72 km per hour. This is 51 km per hour. ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है. This is 45 degree and this whole is 135 degree. Suppose जो रिजल्टेंट का एंगल है with respect to this north direction, this is alpha. C से हमने एसएन डायरेक्शन पर एक 90 डिग्री, तो tan अल्फा होगा
अगर ये 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज डी पॉइंट पर मिलता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू सी डी बाई बी डी। सी डी इज, ये एंगल 45, तो दिस एंगल विल बी आल्सो 45। सी डी इज 72, दिस इज ओ डी। in triangle OCD. CD is 72 sin 45 degree and OD is BD minus OB. 72 sin 45 degree by BD, 72 cos 45 degree minus OB is 51. (72 cos 45), 72 into 1 by root 2 or 36 root 2, 1.414, 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 8 4 8 2 4 2 4 4 0 9 0 5. 72 sin 45 upon 50.904 51. This is almost 51, तो हम लिख सकते हैं 72 sin 45 51 minus 51. This comes tan alpha is 72 sin 45 by 0. It means alpha is almost 90 degree, approximately 90 degree, और 90 डिग्री होगा अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा इज दिस, तो 90 डिग्री इज, दिस इज 90 डिग्री, ऑलमोस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट, ऑलमोस्ट ईस्ट, जो डायरेक्शन होगी वो ऑलमोस्ट ईस्ट डायरेक्शन होगी. दिस सी इज करेक्ट ऑप्शन.